Hmm. सॉरी यार सॉरी हालत थोड़ी ऐसी हो रखी है बिकॉज मैं लेट पहुंचा हूँ होटल एंड आवाज से आप लोगों को पता चल पा रहा होगा कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड तो आज प्लीज बेयर विथ माय थ्रोट एंड आई मीन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला आई जस्ट रीच्ड द होटल एंड आई थॉट दैट आई शुड like be going on with the life as promised. वैसे आज कुछ specific we do not have any planned session though. I thought of keeping it like an open session so that everyone can join and uh, kind of applaud what people have done today on the ground. I cannot be thankful enough. Uh, when I was in Mumbai, no, someone asked me that you back to Mumbai. No, Shobha, I'm not back to Mumbai. I'm flying to Mumbai tomorrow morning. So uh, I'm in Delhi right now. So this is something which was missing in Mumbai, big time. Okay, big time. And today, I mean, thank you to each and every one of them who was present there, shouting their lungs out so that people could hear. And I'm very sure that uh, all of you who were present today on the ground have made your voices heard. So uh, thank you so much. I mean, I'm a little emotional right now, but thank you so much. Really means a lot to me because this campaign, I won't call it a campaign though. I would call it the fight for justice. Is a little personal to me. It's personal in a lot of ways. It's personal to a lot of people. So it's more than personal to me. So it's always on my priority on the top. That despite of the fact that I have a life to lead, but this has become the priority of my life. And I'm just glad we are able to at least ruffle some feathers. I know we don't have to be itna zyada happy, but I really uh, had no words when I saw both the sisters together. We all know Meetu the never spoke on any media channel. She never appeared anywhere. And she was like, it's today. I feel so lucky that I took the decision to, uh, fly down for this protest so that I could have been a part of it. And dude, मेरे गले की तो वाट लग गई है. वेट, मैं आपको अपनी आवाज के साथ बोर नहीं करता हूँ क्योंकि फटेबाज जैसी हो रखी है. Let me put in the link for people. I don't know, Rudraba, True Colors, if you guys are awake, as you said, you wanted the link. I am putting the link on the chat. If you're watching the live, do join in and share your experience from today. And whosoever would want to join in, feel free to do that. I know it's late, but we'll keep it a short live, like half an hour kind of a live, so that we are able to understand what we have done today and what kind of impacts would it create politically as well as within the campaign. So just a moment. Okay. Okay. There's the link. I have put it for people. Whosoever wants to join in, please do join in. Um, let's talk about today because today, see, I've been to protests. Okay, I've been to 14th March. I've been to many more after that. June, then August, then September, then November. November नहीं, December. Then मुंबई में भी कितनी बारी बीच में है. तो today was something different.
not because. So it all started uh, with an information. When I was on the way, Rudrabha called me and he told me that uh, the permission got cancelled for the protest at Jantar Mantar. So we couldn't do it at Jantar Mantar. So we decided a place. I mean, these guys did. I was still on the way. I was still 10 minutes far from the site. So these guys, they managed a place which was above Palika Market. It was a park. But you know what the best part was? That it was not an empty park as it seemed to begin with. As soon as the sun went down, as soon as the sun went down, people started coming in. It became kind of a busy park. So uh, that's what that happened. And people started putting in their ear to what we were doing. People started gathering and seeing what's happening. Then they were talking about Sushant. Then there were people, so basically, we were able to spread awareness in the best way possible we could have. And having both of his sisters literally made me feel that Sushant is standing there with us in solidarity. So that, and I see Sonia in the backstage. I'll add her. Hi, Sonia. Thank you for joining in. How are you? Hi, Bharat. I'm good, and it actually gave me goosebumps, I swear, when you were shouting. Oh God, means I really feel I'm there with you completely. Seriously. It gave me goosebumps, believe me. I was there continuously. I was watching on your channel continuously. I didn't Thank you. leave for a second. It, It it was gave wonderful. it gave us goosebumps as well when we were shouting or chanting justice for Sushant and other slogans. So we were equally thrilled, and we had chills as well. So But then, Bharat, there are many YouTubers, there are many other people who are doing it, but I don't know why. Like since whenever I see you doing something, it takes my heart away. I'm telling you, you do it with I don't know what kind of the way you are doing it, as if like you are doing it genuinely. I swear, I feel so good about it. Seriously. well, no, thank you for your compliment. I respect that, but I'd like to tell you that everyone is doing, Exactly. in the best of their capacity in a genuine way. When they're Bilkul. I do agree. when they're But raising voice somehow, for. like the way you shout, even alone, you were shouting there in front of Mount Blanc. I saw it was lovely, Okay, lovely. थैंक यू. Kudos. आवाज पंजाबी होना तो आवाज बचपन से थोड़ी लाउड रही है. अरे वो तो इस सुन के ऐसा मजा आता है ना, बिल्कुल जैसे एकदम it just takes my heart away. Seriously, too good. I'm with you, Bharat, in this, and I have been following the case every day, finding something should happen somehow. I too wanted to shout, could not be there, of course. But when you shout, like I feel like, somebody's there who is doing it on our part. Thank you. I'm glad I'm able to do that. And each and every one of yours contribution, being here, even leaving your comment, uh, like, that is also an equal contribution which should uh, be there, because it's because of you all that we get the energy to stand there on the ground. And like, because we have people, this and this amount of people who are looking for justice for Sushant. It's not just me. If I think it's just me, I'll be doing things my own way in a silent manner. But as we see, there are thousands of people who want it. So there should be a channelized way in order for us to keep your voice, uh, further. And that's what we are trying to do. So thank you once again for your compliment. I really Thank you, respect Bharat. it. Thank you for being there. Thank you for being there. Well, the least I can do. I'm always going to be here until and unless justice is served. Great. So We all are a team. perfect. So anything else you wanna put across?
No, nothing. I was really thrilled today, so I just came to share that. This is the first time that you've joined in, so welcome to the stream and thank you. Uh, you know, keep joining. Thank you so much. Thank you. Moving on to Ayush. How are you, bro? फाइन सबसे पहले तो आपको सलाम ठोकता हूँ भाई। मेरे को क्यों सलाम आपको ठोक रहा है? क्योंकि आपने तो दिल्ली का आइडिया लगाया। देखिए मुंबई में तो कुछ हुआ नहीं, तो एक उम्मीद दिल्ली में था कि जहाँ से आप कर पाए, वो करना है जगह क्या कुछ फिर? अच्छा कर पाए। रिया के घर के सामने करेगा परसों? जा रहा हूँ कल सुबह मैं मुंबई वापस, तो परसों रिया के घर के सामने करते हैं, क्या बोलते हो? मैं मतलब कर पानी में लूँ। रहकर मगरमच्छ से बैठ लिया आपने। भाई जरूरी है ना, अगर आप हम्म, कहते हो कि आप सिस्टम के अगेंस्ट उतर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू स्टेप डाउन एंड यू हैव टू go all in. Otherwise there's no use, right? Half measures are never good. That's how we have learned since growing up. So it always has to be a complete measure. So we need to ensure that we are following that. So yeah, हमारी लड़ाई everyone. हमारी लड़ाई सुशांत और दिशा की जस्टिस से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जिसमें इन लोग को जस्टिस नहीं मिला। Exactly. उस Exactly. सिस्टम से है और जिसकी लाइन में ये लोग खड़े हैं। उसमें से एक और ये जिया खान भी है, शायद बर्थडे भी है। Yep. और ये सिस्टम ऐसा है कि इन लोग ओपनली चीजें करते हैं। आज मैंने प्रियंका दी से वो मुंबई वाला किस्सा डिस्कस किया, जो पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बोला था अबाउट द फैक्ट कि सबको पता है क्या हुआ है, बट 5 लोग तुम लोग क्या कर लोगे, और सिस्टम के अगेंस्ट खड़े होना इज नॉट दैट इजी. सो शी वाज आल्सो शॉक्ड कि इन लोग अभी तक मुंबई वाले दे आर डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज शी वाज नॉट अवेयर दैट आई वाज डिटेन्ड और समथिंग लाइक दैट. So she was shocked to hear that ki Mumbai police is still stopping people to protest for Sushant. So that's simply understood what's happening there. It's a political game going on. She has made it pretty much clear. And as today on our channel also she mentioned, she kind of reiterated that uh, Rane ji has picked up something which CBI should acknowledge. However, हाँ, there are people on the internet who have already started to make uh, assumptions and speculations about the same fact, that why talking about Rane now, why is the sister coming on the ground now. Critics, stay away, not required, you're not invited, you were never asked to put your uh, thought process further in the first place. If you don't feel it is right, just walk away, is all I'd say. Ayush, anything else you'd like to add, bro? मैं तो यही कहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस जहाँ पे इन लोगों को काम करना चाहिए वहाँ तो नहीं की, और सारा दम आप लोग के प्रोटेस्ट पे दिखा दिया। देखिए मालेगांव में हो रहा है अभी प्रोटेस्ट, वो Hmm. हिजाब को लेके, वहाँ पे इन लोग का नहीं चल रहा है बस, लेकिन आप पर आपके प्रोटेस्ट पे बुलडोजर चला दिया। क्यों? क्योंकि आपके पीछे इतनी सॉलिड बैकिंग नहीं है। इन लोग के Exactly. पीछे Exactly. सॉलिड बैकिंग है। हमने तो भाई प्रोटेस्ट चालू भी नहीं किया था जब मुंबई में हमें पिक किया. हमने तो पोस्टर भी नहीं निकाले हुए थे, वो पैक्ड थे इन द बैग, एंड उन्होंने वैसे ही पिक कर लिया जस्ट बिकॉज वी वर प्रेजेंट इन दैट विसिनिटी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द सीबीआई ऑफिस. दैट वाज देयर प्रॉब्लम. सो या, क्या कर सकते हैं, मुंबई पुलिस तो चप्पल चोर चप्पल चोर चप्पल चोर ही रहेंगे. और क्या बोले. कभी सपने में नहीं बदल सकता है। 4 बम ब्लास्ट हो गया मुंबई के अंदर, क्या किया? कुछ नहीं कर सकते ना भाई, वो तो सिस्टम जिसके हाथ में बांसुरी है वही बजा रहा है. हुँ। प्रसाद जी के पास आगे बढ़ते हैं, आयुष. हेलो प्रसाद सर, हाउ आर यू? Uh, all right, sir. Sir, may सर, I will really say that सर, you have सर, got great dedication, प्रसाद, determination. प्रसाद सर सुनो. डोंट कॉल मी सर आई एम यंगर देन यू सर. यू आर एल्डर देन मी सर, No, प्लीज sir, डोंट. it's not that younger or older, sir. Relentlessly from so many months, and in the beginning, you are told that a case kitna bhi time jaye, I will in your YouTube, you will be there. I mean, you will do the streaming, and you will be behind this case. Sir is I don't call any government official, sir, because
दे आर करप्ट सर. आई मीन मैं किसी पुलिस वाले को या कोई भी, आई मीन मैं सिविल इंजीनियर है. आई विल गो टू जिला परिषद ऑफिस, मैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन. इट्स वेरी रेयर दैट आई कॉल समवन सर, बिकॉज ओनली हु आर नॉन करप्ट पीपल, as far as I know, मैं उनको सर बोला था. It's out of respect, not out of elderly younger thing, sir. Sir, you are told that 10 साल, a decade also you are ready, and plus your determination and dedication. मुझे लगता है मुंबई पुलिस should have requested you that please don't carry out the protest here, and they shouldn't have taken you to the police station because you had already gone there to apply for the permission. That was the wrong from on their part. मैं मुझे ऐसा लगा. नॉर्मली हर सिटी में एक जगह होता है जैसे जंतर मंतर, आप जाके उधर पुलिस स्टेशन में परमिशन लिया तो वो देते हैं. दैट प्लेस इज डिमार्क्ड फॉर प्रोटेस्ट. अभी हमारे सिटी में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस के बाहर 3 रोड है, उधर आप जाके प्रोटेस्ट के लिए परमिशन पूछा तो दे देते हैं. नहीं तो विदाउट परमिशन भी कर सकते हैं क्योंकि पुलिस स्टेशन बहुत नजदीक है. लेकिन दे शुडंट हैव टेकन यू बैक टू द स्टेशन एंड I mean 2.5 3 hours of interrogation. That was wrong. Interrogation isn't asking things. That was wrong. They should have Sir, requested you, since you are they were sitting there, they should have requested you, please don't do the protest. We have not given you permission. Please no, don't do they it. were not they were not just only taking our information. They tried checking our phones, the WhatsApp groups that we are a part of, who's the admin of the WhatsApp group, what is the nature of the WhatsApp group, what kind of chats occur in that group. So they were kind of all over us. So that's a different thing, but that's the way they work, right? That's their pattern of how they work. Mumbai police works on बोलते हैं ना, डर का धंधा है, डर पे चलाती है, ठीक है. सो दे डोंट वर्क ऑन लॉ, दे वर्क ऑन डर, डर ज्यादा. लेकिन जो आज हुआ है ना सर, आज दिल्ली में ये हुआ है, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, मुंबई हिल गया है. और रुद्रबा ने Definitely. ज्वाइन किया स्ट्रीम. ही विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट बेटर once we reach to his point. But yeah, anything else, Prasad sir, you want Sir, to? Delhi is your place. I mean, you are a resident of Delhi. You came to Mumbai and they shouldn't have. I mean, I felt really it was wrong on their part. क्योंकि आप लोग permission लेने के लिए गए थे. They did not give you, but you were still you were there. You didn't even start your protest. अगर उन लोगों को लगता था कि आप protest कर रहे हैं CBI ऑफिस के बाहर, and I don't know this logic of CBI Delhi, CBI Mumbai. CBI is CBI. It's of the country. It's of the nation. सीबीआई दिल्ली केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, ठीक है, बट दे शुड, since the murder happened in Mumbai, CBI Delhi and CBI Mumbai will be working together in this case. That was a very, very illogic thing. CBI No, is no, for the it is nation, being not for the state. no, sir. It is being said that uh, the case is entirely with Delhi का team, not Mumbai का team at all. एक बहुत interesting question आया है, why are you staying in hotel in Delhi, भाई? So, uh, okay, let me break the ice. Okay, I don't care if my mom is watching this right now, but I haven't told my parents that I was flying to Delhi today because of the fact that I just wanted to fly. Actually, मेरा return मुंबई से 24th का हो रखा था. 24th को आई वाज सपोज टू रिटर्न. वो टिकट तो है ही, मैं 24th को वापस आऊंगा दिल्ली. बट आई वांटेड टू फ्लाई स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोटेस्ट. तो तभी आई फ्लू टुडे. आई एम गोइंग बैक टुमारो बिकॉज आई हैव सम वर्क इन मुंबई for the next 3 days, and 24th को again I would be returning to Delhi. So that's the reason. अगर मैं घर जाता तो फिर मैं कल वापस सुबह मुंबई जा नहीं सकता था. तो so I had to stay out. So yeah, mom, I'm sorry if you're watching this. I hope you understand. I hope you know what's what. So yeah, Prasad sir, anything else you Yeah, want to add? sir, that's the thing, sir. Only regarding CBI Delhi is handing the case, okay. But without CBI Mumbai, the place where you went, without their consent, they can't come into Mumbai and investigate. Because अगर उन लोगों को कोई भी local witnesses चाहिए, तो then CBI Mumbai will help them. सो दैट्स अ इलॉजिक थिंग. कैलकाटा में भी हुआ, सब जगह हुआ, सीबीआई ऑफिस के बाहर आप भी गए थे. लेकिन दे टोल्ड दैट सीबीआई, आप इधर क्यों, सीबीआई मुंबई में क्यों आए हैं? सीबीआई दिल्ली इज योर प्लेस. दिल्ली इज योर प्लेस. यू कैन गो देयर एनी टाइम.
That's your place. You But know the local things very well, better than Mumbai, right? right, right. Any given So day. that's the only thing, sir. Yeah, despite of the fact, sir, please, Bharat, sir. Prasad, sir, please, Bharat, हाँ, आगे No, से. I mean some three or four people in YouTube. I always address as sir because your content, your way of presenting it, and your hard work. I mean, आपके पास दो तीन आदमी होंगे friends जो आपको help करेंगे ये collect करने के लिए just articles. There's lot of hard work, sir. It's not easy. Searching in Google is also art. आप थोड़े articles जो search करते हैं, जो site से निकालते हैं, that's a art. That's not easy. I know it, sir. That's not. You need time to do that. You need, I mean, No, concentration. thank I you, sir. mean, Thank you, but I still don't find myself qualified to be called a sir. So thank you for your respect. I mean, otherwise, I really, sir, if you are not qualified to be called a sir, Mumbai police they might have wanted to meet you also. Just see the flip side of it. They wanted to meet Bharat Durga. They wanted to know what type of personality he is. आपसे yeah, कितना क्वेश्चन किया है they might want to know about because even they might have seen the streaming, sir. YouTube streaming देखते होंगे क्योंकि उनको मालूम रहेगा ना 100% hmm. मालूम रहेगा sir. That is the only thing. Thank you so much, sir. Thank you. वो भी डीसीपी को इंटरेस्ट था मुझसे मिलने में, so I'm honored. All right, moving on to Shiva. Hi, Shiva. Good evening. How are you? Hi Bharat, how are you? And I'm good. I've seen you at the protest, and I mean, it was very happy to see the two sisters. But I, as far as Rane is concerned, I don't know what was his actual agenda. Again, after a year back, then before Bihar elections, he said the same. And I think some elections are around in which state I don't know. I think he's again using his name. And I have two things to say about this. It is Hmm. we see we all are uh, we speak on speculations. Means we have seen the circumstances around this death, so that we have concluded that it might not be a suicide. But at the end of the day, the Disha's case, we have nothing on internet, so everything is based on speculations. And then when the last time, I think the accused in Jia Khan case, when he Hmm. came on Aaj and Hmm. in the interviewer asked that there is a BJP leader called Narayan Rane, and he named you that you were present in some party at that night at some place. I mean, in the vicinity, and he said that these all are WhatsApp forwards. I think you must ask Rane that Hmm. who said to him that I was there. I was at my home. See, he cannot say based on speculations. On to be honest, we are just thinking that this might happen, but we don't know exactly what is the reason that he got murdered. So I want him to. I mean, Rani should have something basis, solid basis. Uh, if he doesn't have that solid basis, it is also wrong that the family you can't use a deceased man's name for your political gain. If you have something, and you must pass on that information to the family. And I want what the sisters think of Rani ji, and that's what I wanted to ask her. Okay, okay. No, thank you so much. I'll just address your point. एक second, आयुष. अगर ब्रो तेरे को कोई और पॉइंट रेज नहीं करना है तो देयर समवन एल्स इन द बैक एंड, क्योंकि मेरे पास 6 का ही यहाँ पे वो है, लिमिट है, ले तो लो कैन आई ऐड देम? ले लो आप, मैं बैक स्टेज चला देता हूँ। हाँ ठीक है, मैं एक सेकंड। ओके, ऑलराइट। हाँ तो शिवा, द पॉइंट you have raised a very valid point, ठीक है, in terms of Rane doing or playing whatever game he's playing. Okay, now I see it from two angles.
If he knows, if he really knows what has happened, and if he has evidence of what has happened, first of all, he should be taken for a ride as to why he was silent for the last 1.5 years, or 18 months, or 20 months, Exactly, exactly. right? If he does not have anything, then also he should be taken for a ride. सो वो एक तरफ उसके लिए खाई है, दूसरी तरफ कुआं है. अगर उसके पास कुछ है तो भी ही इज अकाउंटेबल. अगर उसके पास कुछ नहीं है तो भी ही इज अकाउंटेबल. उन्हें मालूम नहीं है कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल एजेंडा के लिए कितना गंदा पंगा उठा लिया है. क्योंकि ये उनका और उनकी फैमिली का करियर तबाह कर सकता है. और मैं आज ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आज हमने हमारी ताकत देखी है. जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ इट. और जब लोग उससे आगे बढ़ेंगे, नंबर्स में धीरे धीरे ग्रो होंगे. आज दोनों बहनें रोड पे आई हैं, तो ये देख के आई एम वेरी श्योर कि और भी बहुत सारे ज्यादा लोग जुड़ेंगे हमारे साथ ग्राउंड प्रोटेस्ट में. सो The one thing I wanted to ask is what do the sisters think of Rani's statement? I don't know if you they go to the protest. they very clearly said that if Rane has something, then the CBI should take it into acknowledgement. That's all. And nothing else. And sisters, I'll tell you all one thing, okay, एक्चुअली very आई एम clear. सॉरी इसमें मैं बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूँ एक्चुअली ये सवाल ही इतना क्रूशियल है इसका सीधा सा उन्होंने यही बोला हुआ है कि दे आर जस्ट अप टू एनीथिंग जो कि ऑफिशियली एजेंसी के थ्रू है उसके सिवा वो बाकी सारी चीजों पे उतना वो नहीं है तो दे आर इनटू द Exactly. ऑफिशियल स्टफ एग्जैक्टली. और रुद्रमा, मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि एक चीज मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ. Sisters cannot just go ahead and say anything and everything related to the case or the campaign or the protest. अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि they stepping on the ground, how big is that? You have no idea how big of a step But that but is. they can go to Ranis and seek information now because it's their brother. Ultimately, you are using the name of their brother, and they have a right to know. I'm very Rani sure. can't deny I'm very saying that. sure. I'm very sure they're already working on it. I'm very sure. Without any doubt, iota of doubt, I can tell you that they are already working on it. Because Shiva, if you would have seen them right in front of you today, the way I saw them, both of them, they love their brother. They just love him. हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं. हाँ रुद्रपा, आई एम सेंडिंग द लिंक. एक सेकंड, तुम डिस्कनेक्ट हो गए. सो they just, I mean, they can cut their heart out for him. They're trying their best. Trust me on that when I'm saying that, because I've met them. I know what's going on in their mind. I mean, not know exactly, because I am no mind reader. But when you get into a conversation, you get to understand ki, what tangent the other person is on. And I can tell you that this is something wherein they are pretty much serious in terms of asking for justice for Sushant. So yeah, we should not even have an iota of doubt whether they would reach out to Ranes or not. They certainly would. And Judy J, can you I please have like, one more thing to go say. ahead, Can I say that? please, I mean, please. I have one more thing to say. Recently, I've seen one a regional movie. In that, that fact that I came to know, whenever a murder happens, the most important thing is the murder weapon used. In Hmm. this case, I think you all might have seen the documentary of Jia Khan, where the mother clearly states, asked about where is the cloth with that alleged cloth which she said to be hanged. I mean, allegations that she hanged herself. And when she asked Mumbai police, and Mumbai police said
I mean, CBI has the evidence, CBI has the cloth, and when she asked CBI, CBI said Mumbai police has it. Hmm. I'm a bit worried that did Mumbai police preserve the alleged that green cloth because it's very vital as far as the case is concerned. That's what I wanted to know, if that cloth is missing it as it was in Gia's case. I think it's going to be a very inconclusive, and we can't prove that The cloth they is can not say anything. the cloth is not missing. They took the Uh, cloth. This took the uh, cloth with them in uh, a transparent polythene, and they also said later on that there were only three fingerprints found. So the cloth is not missing. It's very much there. and the tensile strength, they said that it can hold up to resist up to 200 kgs, and Mm. it's is this some sort of a joke? I don't understand too. How can Yeah, a cloth it was humor though. uh, 200 kg is not possible. That looked more like a dupatta to me than a kurta. So yeah, one uh, more thing I wanted to address, that you have shown that two videos where they were morphed. One morphed videos where in one video where sister was not present, you mm, see the cloth beside the Sushant body, and after sister comes, the cloth is seen I mean, along with the fan, and this raises a lot of questions. And why did they move anything on the crime scene? That the I think the video should be shown to the sister. I know it's painful, but it can be helpful because they can question why did they change the position of the cloth. So mm. were they trying to indicate something? And this is what I thought a point would make a valid point. I don't know whether you agree or not. Nahin, nahin. You make a good point though. I mean, I'm pretty much sure that the particular video that you are stating, uh, should reach the family, and if they haven't seen it yet, I'm sure they might have, but if they haven't seen it yet, see, the family knows a lot of things that we don't even know, right? Because I mean, Mitudi was there with Sushant, so they know a lot of things which we might not be aware of. So let's wait. Let's see how it plays out. Let's see how the agencies plays out. Family is doing their best in order to reach out to the agencies, following up. Be it Mitudi, be it Priyanka Di, they are head over heels in terms of ensuring that they are following up properly for this case. And that's one of the biggest reasons why they both showed up on ground protest today as well. Otherwise, what was the need for them to do that, right? If they wouldn't have cared about it, they would have just sat at home, just like the last, as people say कि पिछले 1.5 साल से तो उतरे नहीं, तो अभी भी नहीं उतरते. क्यों उतर रहे हैं? Because they care. ठीक है? So that's what I'd say, Shiva. So thank you for putting across your points. They are valid, but they have a reasonable explanation to it. With everything that family is trying to work out in order to ensure that the case moves on a smoother route. So thank you for that. We'll keep One it a last little short, thing. Shiva. We'll keep it a Uh, little short. Yeah, go okay, ahead. okay. You wanted to I say mean, something? actually, I'm discussing about this case with one of the I mean uncle who I met in this moment, and he said one thing is that he has friends in Mumbai and Pune, and Mm. he's always discussing and with about this case. Those who be with his friends who live in Mumbai and Pune, and they are like, don't talk about this case. I don't know. Is there any Mumbaiker in this chat or in watching this video? And I don't understand why Mumbai people are so unwilling to talk, not unwilling to not to talk about this case. And what's I mean, they are like, yeah, ये suicide है यार, इसको क्यों खींच रहे हो यार. I mean, they can see the videos of SSR where Ria leaked saying that he was looking abnormal, and I question to those people, if you have seen those videos where
SSR looked abnormal, and why don't you see his ligature mark? That's the only question that I wanted to ask. Why don't you see the two sides? As you said, we have seen that leaked video, but why don't you see the ligature mark and the circumstances around the death happened? That's what I want to. I don't know why Mumbai people are so unwilling to talk about this case. If there's any Mumbai people watching, they can answer to this question now. See, Hello, I'll answer hello. that for you. Yeah, Tanya. I stay in Mumbai, by the way. I'm live streaming with you, and I really don't know what to say. We are aware of what is happening with the case, and secondly, I want to give a suggestion to the new protest site, which you can add for next protest campaign. CST Heritage Building, Bharat. I would have to search for it, but yeah, I'll find it. It in the center there is a gallery where people mostly stand there to view the entire heritage structure. They take selfies also, and that Mm, place itself is a good protest site. There are many silent protests taking place. If mm, we stand there in total silence, only taking hand the placard and whatever the material with us, हमको सिर्फ चुप रह के खड़े रहना है और हर वो ट्रायंगल डिजाइन है ट्रायंगल डिजाइन के गैलरी में खड़े रहना है चुपचाप खड़े रहना है किसी कुछ नहीं बोलना है क्योंकि वही पोजीशन है ट्रेन से लोग आते हैं जाते हैं मुंबई में आने के बाद वो लोगों को देखना चाहिए कि क्या हो रहा है देखो वो पोजीशन बहुत पेक्युलर है मुंबई से आते हैं ट्रेन के लोग पैसेंजर्स आते हैं न्यू लोग आते हैं उनको समझ में आना चाहिए कि ये देखो क्या हो गया हमको सिर्फ चुपचाप रहना है हमको कुछ नहीं बोलना है सिर्फ वो हाथ में प्रोटेस्ट का कैंपेन का पोस्टर लेके खड़े रहना है वहाँ हर एक प्रोटेस्ट होता है साइलेंट प्रोटेस्ट वही होता है एंड दैट इज द बेस्ट प्लेस आप ढूंढना है तो ढूंढ लीजिएगा ठीक है मैम मैं सर्टेनली I'll look at it. और काफ़ी अच्छी चीज़ होगी अगर ऐसा होता है तो कि हम साइलेंटली बिना किसी प्रॉब्लम के ऐसा प्रोटेस्ट कर पाए. However, I बहुत doubt. बहुत मेडिकल कॉलेज के प्रोटेस्ट होते हैं अभी कोविड का भी प्रोटेस्ट हो गया हर मैम, एक प्रोटेस्ट हो गया वहां मैम, पे सिर्फ शांति किसान खड़े रहना है कुछ नहीं बोलना है Tanya, Tanya, okay. I was just trying to say कि protests लोग करते हैं महाराष्ट्र के अंदर. Judy, I'm sorry. Are you trying to say something? I was saying something. Sorry, hi, you want me to, can I speak? I was. Well, let's go one by one to Oh, each sorry, one. sorry. Oh, sorry. I'm Yeah. sorry. My mic was on. Sorry about that. Oh, okay, okay. No worries. Yeah, I would request everyone to keep it short. हम यहाँ पे, I mean, थोड़ा सा short रखते हैं, please. थोड़ा सा, I mean, मेरी भी एनर्जी थोड़ी लो है, प्लीज उस चीज की मैं थोड़ी एक सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वो उसी को सेकंड करते हुए अगेन ऑफ कोर्स वी आर अनस्टॉपेबल एंड वी आर पावरफुल इनसाइड एंड अदरवाइज भी एज वेल बट क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जॉशन गया है तो इसीलिए मैं भारत का वो चीज समझ सकता हूँ तो वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम सारी एनर्जी लगाएं तो इसलिए आप लोग बोलिए हम लोग भी शॉर्ट शॉर्ट बोलेंगे जिससे कि हम थोड़ा रेस्ट भी ले सके रेस्ट. रुद्रबा टॉकिंग अबाउट रेस्ट. ओके, चलो, we'll talk about that later. Tanya, नहीं, that was a really nice idea. However, दिक्कत ये है कि अगर आप मुंबई के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के नाम से कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो आपको एप्रहेंड किया जाएगा मुंबई पुलिस के द्वारा. ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है मुझे वहां पे पिछले 3-4 दिनों में कि अगर एसएसआर के नाम से कुछ कर रहे हो वो मुंबई पुलिस को पसंद नहीं आएगा और वो आपको करने नहीं देंगे. चाहे आप किसी भी जगह में, चाहे पीसफुल कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो. आपको पता है हमें पिक कैसे किया था? हमने फोटो भी नहीं निकाली हुई थी सुशांत की, वो भी बैग के अंदर था.
हम तो सिर्फ साइड में फुटपाथ, जो थोड़ा हाइट वाला फुटपाथ होता है ना, हम थोड़ा वहां बैठ गए थे टिक के, और हम बस वहां बैठे थे क्योंकि अभी भी 45 मिनट्स थे 12:30 बजने को। अचानक से दे केम एंड पिक्ड अस अप जस्ट लाइक दैट, कि ह्यूमन प्रेजेंस यहाँ हो ही नहीं सकता सीबीआई के सामने, ये बोल के उठाया हमें। सो दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। आई गेस शी Tanya dropped out. It's okay. Let's move on to Abhay. How are you, Abhay? आई एम फाइन। और एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आज का प्रोटेस्ट देखकर गूज़बम्स आ गए। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग वहीं पर मौजूद हैं। चाहे वो अमित जी हो, चाहे वो कपिल जी हो, आप हो, रुद्र भाई हो, सबने एकदम गूज़बम्स दे दिए। और I cannot. और I agree. I agree, and I cannot explain the feelings about. Uh, I cannot explain the feeling that we all felt there. With the presence of both the sisters, it was like as if Sushant is with us. And not just that, but the energy that everyone was filled with. My God, that was class apart. So I'm very happy today, in a good mood. That I'm very satisfied. Remember, I said this in Mumbai that I didn't find that satisfaction, and I was banking on Delhi to help me with that. And dude, my day is made. My day, my month is. So yeah. Anything मेरा else, भी Abhay? मेरा भी जब मैंने वो प्रोटेस्ट देखा ना, तो मेरा भी मन ऐसा करने लग गया था कि अभी अभी भी टाइम है, अभी भी निकल जाता हूँ दिल्ली के लिए। मतलब ऐसा मन मेरा होने लग गया था कि। और ये भी है कि वहाँ वरुण भाई के चैनल पर हमने देखा था, मीतू दीदी बात कर रही थी, तो मतलब She was. मेरे तो आंखों में आंसू आने लगे उनको देख करके। और और कुछ पहले किसी बेशरम ने है, उनसे कुछ बेशरम है जो अभी भी इंटरनेट पे बैठ के बॉडी डबल के गाने गा रहे हैं। मतलब शर्म से डूबना चाहिए ऐसे लोगों को। बट ठीक है, कीपिंग दैट अपार्ट। किसी ने हाँ, किसी ने किसी ने उनसे बात करने की भी कोशिश करी मीठू दीदी से, तो पहले वो अनकंफर्टेबल थी कि भाई मैं कुछ नहीं बता सकती। तो फिर लोगों ने उनसे बात करी कि हमको आपसे कुछ प्रश्न नहीं करने, कुछ नहीं पूछना। तो फिर वो थोड़ी कंफर्टेबल हुई और लोगों से बात करना स्टार्ट किया। वरना आप देख सकते हैं कि भाई ट्रोलिंग का क्या असर होता है लोगों के ऊपर, कि उनको लगा कि कोई कहीं प्रश्न ना पूछ ले। हम्म हम्म नहीं यार, सी फैमिली को ना बहुत वेरी करना पड़ता है कि वो पब्लिक अपीयरेंस दे के क्या बोल रहे हैं, क्योंकि उनका एक एक सेंटेंस वुड काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस द केस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है कि जो ऑपोजिशन है या फिर जो अक्यूज्ड हैं, वो एक कंडीशन उठा सकते हैं बीच में, वो एक ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि दिस इज इन्फ्लुएंसिंग द केस। सो दैट्स व्हाई फैमिली हैज हैज टू बी वेरी कैलकुलेटिव ऑफ व्हाट दे स्पीक एंड व्हाट दे नॉट। यस अबे, यस, आई लेट्स कैन अंडरस्टैंड। या एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? फिलहाल के लिए नहीं, अभी मैं जाता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। Let's move on to Joshi. I hope I'm pronouncing your name correctly. Is that correct? Hello, yes, it is correct. All right. And How are you? I'm fine. पर थोड़ा सा आज मूव्ड हो गई थी ये सब देखकर। बेसिकली मैं कोलकाता से हूँ और Okay. मैंने ग्राउंड प्रोटेस्ट बहुत बार किया, कोलकाता में भी किया। और ये सिचुएशन जो आप बोल रहे हैं ना, पुलिस आके डराने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ भी हुआ था। तो हम कोलकाता में एक जगह है रानू छाया मंचो, तो वहां पर बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो ऐसे पुलिस का जो वैन है ना, वो पहले तो वो लोग देख के जाते हैं, फिर मोबाइल से रिकॉर्ड करके जाते हैं, फिर वो वैन लेके आए थे। पर हमने उस वक्त क्या किया था, मैदान में जाकर
बाकी का प्रोटेस्ट किया। मैदान, वहाँ पर सब लोग आते हैं, खेलते हैं, बहुत बड़ा प्लेस है वो। वहाँ पे जाकर हमने प्रोटेस्ट किया था। पर आज आपने जब बोला कि जंतर मंतर में आप लोगों को परमिशन नहीं मिली, क्यों? हम्म, क्योंकि वहां पर तो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, वहां फुल पर था मैम, परमिशन। फुल हाँ, था, फुल फुल था, था एक। ओके। क्योंकि कोई बात। जिन्होंने पहले, शायद आई एम नॉट श्योर कि क्या एग्जैक्टली हुआ, एग्जैक्टली क्या टर्न आउट हुआ, बट जो हम्म। मैं समझ सकता हूँ कि जंतर मंतर पे परमिशन मना तभी होगी हम्म। जब वहां पे जगह नहीं होगी। क्योंकि नहीं ओके। तो हमने देखा है कि, मतलब जो मैंने अपनी आंखों से वैसे यूजुअली देखा है, रुद्रबा वुड बी एबल टू गिव अ बेटर इंसाइट टू इट, कि हम्म। अगर रियल Yeah, I टाइम पे will भी आप, share the exact reason. I will share या the तो, exact reason. Please come. हाँ, तो पुलिस वालों को अगर 2-3 हज़ार रुपए भी दे दो तो दे अलाउ, ठीक है, वो होता है। बट आई डोंट नो आज का रीजन क्या था, बट या, बट आई एम ग्लैड दैट वी वर एबल टू, मतलब रुद्रबा, थैंक यू सो मच भाई, तुम लोगों ने बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट करी। मैं तो उस टाइम तक पहुंचा नहीं था, बट तुम लोग पहले जहाँ पे थे, दैट वाज वेरी कंजेस्टेड एरिया, वहाँ पे सिस्टर्स का आना भी वुड नॉट हैव बीन अप्रोप्रिएट, बट जो जो जगह तुम लोगों ने डिसाइड करी, दैट वाज रियली नाइस। सब सुशांत सर हाँ, करवा रहे हैं। वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट, जो आप ही ने बोला था आज, अगर आपको याद हो। वी आर जस्ट द Hmm. इंस्ट्रूमेंट्स। Yeah, accessories. So, बहुत जो अच्छा लगा। हाँ, you want to say? हम Hmm. बहुत अच्छा लगा हमको देखकर, वो पहली वाली जो जोश है ना, वो वापस आ रही है, ऐसा लग रहा है हमको देखकर। और I'm glad. आप तो बहुत हिम्मत है आप में, बहुत करेज है, अकेले जाके आप प्रोटेस्ट करते हैं मुंबई के जैसे जगह में। तो वही बहुत बड़ी बात है। और मैंने आज वरुण कपूर जी के शो में भी बोला था कि आपको ये बोलने के लिए कि आप बहुत अच्छे कर रहे हो। Thank you. और Thank you. ये देखकर दूसरों को भी सीखना चाहिए कि अगर कोई एक एक व्यक्ति, एक जन, जहाँ पर प्रोटेस्ट करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, वहां पर जाके वो कर रहे हैं, तो हम लोग दूसरी जगह क्यों नहीं कर सकते, इकट्ठे क्यों नहीं कर सकते? और Exactly. मुंबई के लोग में भी पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा डरते हैं। जितनी नहीं ज्यादा मैम, डरोगे ना लोग। मुंबई में रह के ना एक चीज मैं बोल सकता हूँ, हाँ। मैं उनके डर को डाउट नहीं करूंगा, हम्म। क्योंकि मुंबई में माइक्रो मैनेजमेंट होता है पुलिस के द्वारा, और सिर्फ हम्म। पुलिस का ही नहीं, वहाँ पे युवा सेना का बहुत चलन है, हम्म। तो सेफ रहना पड़ता है। बट मुझे ये हम्म। लगता है कि मतलब मेरा एक हमेशा से एक वो दिल्ली वाला एटीट्यूड रहा है कि अब अगर हम्म। आवाज उठाई है तो फिर देखी जाएगी जो होगी टाइप से। सो दैट्स व्हाई आई डू इट। आई डोंट एनकरेज people to go alone and do such kind of things in Mumbai on their own, because first of all, हम्म। it's not safe. I'm saying that हम्म। out of experience because I know, and whenever हम्म। I have gone to do any such thing, I have mentally prepared myself to go there with that कि अच्छा मैं जा रहा हूँ ना, ये होगा, मुझे मालूम है, but मैं mentally prepared. So that's how I went. So I would not encourage people to do it alone. I would हम्म। rather encourage people to gather in numbers in Mumbai, and I can give it to you in writing. अगर 100 लोग इकट्ठा हो गए ना मुंबई के अंदर, I बहुत can डर जाएंगे। आई कैन बेट कुछ नहीं कर पाएगी मुंबई पुलिस, हम्म। कुछ भी नहीं कर पाएगी। सो दैट्स व्हाट बहुत आई अच्छा वांट। लगा फैमिली को एनीथिंग आके एल्स देख के। यू वांट टू स्पीक? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा फैमिली को भी देखकर, और बहुत ज़्यादा दुःख भी हुआ था उनको देखकर, जब कैंडल लगा रहे थे तो बहुत रोना आ रहा था उसको देखकर। मैं सबको बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अपनी तरीके से जिसको मतलब जो कर सकते हो वही करो, मूवमेंट के साथ जुड़ो, और जो लोग अगर निराश होके चले गए थे वो भी वापस आ जाओ, क्योंकि टुगेदर अगर हम लोग सब साथ मिलके ही कुछ कर सकते हैं, अलग-अलग रह के कुछ नहीं होगा। Together we have to fight, and we have to fight for justice. और ये अगर एग्जैक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर में ऐसी चीजें होती रहेगी। इसको बंद करना बहुत जरूरी हो गया है अभी। ओके मैम, ओके, हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट बन के चलना है, इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। आई गेट इट, एंड दैट्स द की टू हाँ। डू इट।
we have to carry each other forward. So we'll do it. And once again, I'd like to thank you for joining in and putting your views forward. Without taking any time, let me move to Rudrava. यस, Rudrava. जाने से पहले मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू टू ऑल एसएसआरियन, सबको जिन्होंने आज प्रोटेस्ट किया, सबको थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। ओके। Thank you. Thank you. Thank you. Rudraba, how are you, bro? डोसा क्या बोला? डोसा बोलो बोलो। मैं पूछ रहा हूँ, डोसा अच्छा था? डोसा डोसा भी अच्छा था, बहुत कुछ अच्छा था, सभी कुछ अच्छा था। और इस हँसी के पीछे ये कारण है कि अच्छा, पहली बात, मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई लगे तो रीज़न ऑब्वियस है, तो सह लेना व्यूअर्स आप सभी। पहली चीज़ मैं फटाफट से कन वो बात कर लेता हूँ वन बाय वन। बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स पे यहाँ पे भी बात हो रही थी। तो पहला चीज़ वो प्लेस को लेके परमिशन वाला, तो उसमें 2 चीज़ें थी। जैसा मैं बोला कि जब भी हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं या कुछ इफ़ेक्टिव करने का कोशिश करते हैं, 1-2 बार हो तो कोइंसिडेंस नाम का इंग्लिश में एक वर्ड है, समझ में आता है। हर बार हो तो फिर लगता है कि नहीं, ये कुछ ऑन पर्पज़ हो रहा है। और वो हर बार क्या चीज़ है कि सुशांत सर अपना मैजिक दिखाते हैं कॉस्मोस से। कैसे? कि नंबर 1 कि क्योंकि हमने पहले एप्लीकेशन टाइम से नहीं मतलब किसी कारण से दी थी, तो वो क्या हुआ, आगे-पीछे थोड़ा हो गया। मतलब जब तक हमने इन्फॉर्म किया हुआ था जंतर-मंतर के लिए जो भी करवा रहे थे, जैसा वो ऑथॉरिटीज़ ने हमको बोला फ़ोन पे, तो क्या हुआ, किसी और को मिल गया। तो ऑफ कोर्स वो जगह बुकिंग बेसिस पे चलती है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कारणों से सरकार से नाखुश हैं, तो ऑब्वियसली सबको अपनी बात रखनी होती है। तो जगह नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर मान लो जगह मिल भी जाती, तो भी वो इसलिए सस्पिशियस है क्योंकि एक चीज़ सोशल मीडिया में आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, बहुत मुझे भी आपको भी टैग किया गया था। कुछ सिक्योरिटी ग्लिच थी, मतलब एलिजिडली, ठीक है? और जिस प्लेस में हुई भाई, आपने देखा होगा कैसे वो पूरा एरिया क्या था, उसकी खासियत क्या थी उस एरिया की। नॉट ओनली हद वाली सेंट्रल थी, मतलब सीपी की सेंट्रल थी, दिल्ली की सेंट्रल थी, बल्कि उसके आसपास सिक्योरिटी बहुत टाइट थी, लोग बहुत ज़्यादा थे। और सुशांत सुशांत की जो घर से जो सिस्टर्स आईं, ठीक है? तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि यह पता नहीं कैसे मैजिकली ये चीज़ हो गई। तो मैंने जैसे आपको बोला उस टाइम पे, आप ही के शब्द हैं वो, इट्स लाइक सुशांत सर इज़ डूइंग एवरीथिंग, वी आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? तो ये रहा उस क्वेश्चन का जवाब। दूसरा कि एक भाई थे, आई एम सॉरी मैं नाम वो नहीं कर पा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा हम सभी एग्ज़ॉस्टेड हैं एक तरीके से। बट थके नहीं है। हाँ, अभी रात को भी कोई प्रोटेस्ट करने को बोलेगा, अभी निकल जाएँगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहते हैं, इतनी एनर्जी सबके अंदर है, भरत के अंदर, मेरे अंदर, ट्रू कलर्स भाई के अंदर। तो उन्होंने बोला था कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली बात। अब इस बात को ऐसे समझो, थोड़ा अब यहाँ पे मैं टेक्निकल चीज़ों पे बात करना चाहूँगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ किस कपड़े की, हम तब वो मान के चले जब यह पॉसिबिलिटी मान के चल रहे होंगे कि शायद लटका होगा बॉडी। अब मैं ये भी सुसाइड वर्ड भी नहीं यूज़ करना चाहता, लटका होगा बॉडी, तब टेंसाइल स्ट्रेंथ का कांसेप्ट आता है। अरे भैया मेरे, आप इसको 2 नज़र से देखो, कोई भी फ़ोटो, कोई भी एविडेंस जो आया है सामने, वो 2 चीज़ें हो सकती होंगी, या तो करेक्ट हो या तो प्लांटेड हो। अगर प्लांटेड है, दोनों नज़र से हमें देखना है, करेक्ट है तो उसको उस हिसाब से एनालाइज़ करेंगे, अगर प्लांटेड है तो। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ का कांसेप्ट तब आता है जब हम लटकने की बात करते हैं, लटकने की बात तब आता है जब इस एंगल से एक देखने की प्रयास सी हो कि क्या पता बॉडी लटका होगा, जिससे कि यह साबित हो सके कि शायद सुशांत ने अपने साथ कुछ गलत किया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तक तो वहाँ तो बात खारिज हो जाती है, क्योंकि जब आप स्ट्रैंगुलेशन की बात लाते हो, तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ का कांसेप्ट वैसा मायने नहीं रखता है, वो लटकते समय मायने रखता है। तो फिर वो हरी पट्टी लाए, कभी बाथरोब लाए, कभी गमछा लाए, तो टॉवल लाए, कुछ भी लाए, दुपट्टा लाए, हार्डली मैटर्स, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। तो इसीलिए हमें हर एंगल से हर एक पॉइंट को देखना है। तीसरी चीज़, कर्म करना अपने हाथों में है, और उसमें एक चीज़ मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे को कोई अधिकार नहीं है किसी को जज करने का, तो जो मैं कहने जा रहा हूँ बिना किसी जजमेंटल होके,
देखो आप लोग थोड़ा, जो भी लोग सवाल पूछते हो सिस्टर्स से या इवन हमसे भी, जो इवन सीबीआई से बात करने की कोशिश करते हैं या चीजें, मान लो आपके आंसर का आपको जवाब मिल गया, आपकी आत्मा को तो शांति मिल गई, आपके मन में तो तसल्ली आ गई कि हाँ मैं यह जवाब जानना चाहता था, मिल गया। लेकिन यह बात सोचो कि क्या वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कबाल से कोई अगर सुन रहा होगा, क्योंकि जो भी हम मोस्टली बातें करते पब्लिक डोमेन में कर रहे होते हैं, तो अगर वो बात किसी मोल किसी कबाल तक पहुंचती है, तो क्या उनको किसी भी तरीके से एम्पावर कर सकती है या हमको कमजोर कर सकती है? यह थोड़ी मैच्योरिटी में लानी होगी। तो कई बार सवालों के जवाब को अपने तक रखना या ना जानने में भी भलाई होती है। अगेन आपको क्वेश्चन पूछने से मैं नहीं रोक रहा, बट ऐसे क्वेश्चंस को पूछो कि जो आपको लगता हो कि इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली नेगेटिवली इन्फ्लुएंस ना कर सके, कि अगर उसका जवाब मोल्स को भी पता चल जाए, कबाल को भी पता चल जाए, तो उसका वो फायदा ना उठा सके। आप समझ रहे हो? तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ प्रिसाइजली। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन अभी उनका लॉयर है, ठीक है? मान लो अगर कि बहुत कोई इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन है, लॉयर है। अभी चैट पे आया था ये क्वेश्चन। हाँ हाँ, मैं देखा, मैं सारे क्वेश्चंस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं अगेन जज नहीं कर रहा। हो सकता है मैं कुछ गलत बोलूं, आप लोग प्लीज आके टोकिए भाई, हम एक दूसरे को ऐसे ही करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। गलतियां सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी बहुत सी होंगी, हो हैं बल्कि। कि लॉयर कौन है? तो अगर मान लो ये इंफॉर्मेशन पहली बात तो है नहीं मेरे पास, या आई एम श्योर कि यहाँ पे किसी के पास भी नहीं होगी कि कौन एग्जैक्टली लॉयर है। लेट अस अज्यूम अगर मिल भी जाता है और वो लॉयर मान लो बहुत अच्छा हो, सब कुछ हो, क्या आपको ये फील होता है कि वह अगर हम पब्लिक डोमेन में इन केस अगर पता होता और डाल दें, तो क्या कबाल इस इंफॉर्मेशन का फायदा नहीं उठा सकती है? सबसे बड़ा इसमें एडवांटेज क्या है? अगेन सॉरी फॉर दिस वर्ड, एडवांटेज बोलना नहीं चाहिए, बट प्लस पॉइंट है इस मूवमेंट का। नंबर वन, सुशांत सर के इस केस में बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में आ गई है। नंबर टू, फैमिली खुद बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है कौन से टाइम पे क्या स्टेप लेना है, एंड वो डिटरमाइंड है, वो अपने एक्शंस के थ्रू सामने आकर प्रूफ कर दिए हैं, अपने वर्ड से भी अपने एक्शन से भी, ठीक है? नंबर थ्री, हम लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं अनकंडीशनली, ठीक है? थके हो, बीमार हो, कुछ भी हो, फिर भी हम लगे हुए हैं। यह सारे इतने कारण है कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई दो चीजें हैं, या तो जस्टिस मिल जाएगी या तो हम छीन के ले लेंगे। किस बात का टेंशन है? जीत तो हमारी तय है, सुशांत को न्याय मिलना तो तय है, या तो मिलेगा या तो हम ले लेंगे। भाई सुशांत को न्याय मिले आने से वो जो है, तो यही सारी चीजें हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किसी ने पूछा था, आई एम रियली सॉरी, एक बार फटाफट देख लूं कि अगर किसी का मैंने मिस किया है तो। किसी ने तो लिखा हुआ था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई एम सॉरी। किस रिलेशन में था? हाँ, अगर मिल जाता है तो आई विल कवर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज पूछ लो, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, कमेंट सेक्शन में मैंने देखा था रिलेटेड टू दिस मोमेंट। तो ये सब अपना कर्म वगैरह करते रहो, और क्या, बाकी ट्रू कलर्स भाई अच्छे से बोलेंगे। इनके से याद आता है तो मैं 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा। बाकी सबने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, सभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू सो मच भाई। और हाँ, मैं एक चीज जो आप सबको बताना चाहता हूँ, जो रुद्रबा ने आज किया, माय गॉड, जीनियस, जीनियस। भाई ने, आप सबको पता ही होगा, भाई ने यहाँ पे 2 क्यूआर कोड्स लगाए हुए थे अपने पेट पे, ठीक है? इफ एनीवन स्कैन्स दैट क्यूआर कोड, जैसे ही कोई स्कैन करेगा, उनके फोन में सारे एविडेंसेस की एंड रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस इंफॉर्मेशन पॉप हो जाएगी. So if they want to know about Sushant, if they want to know what happened with Sushant, so all they need to do is just scan that QR code and you would have all the information. So I have decided कि मैं उस QR कोड को सब में, मतलब वंस, मेरे पास फोटो है उसकी, बट एक बार मैं रुद्रबा से उसका एक यू नो एक्चुअल क्यूआर कोड का कॉपी लेके I will also tweet and I will spread it to the best, and I would encourage all of you to do the same, so that people who don't know about this case, they just simply need to refer to this QR code and
technology is advancing. So a great initiative, Rudrabad. Thank you so much हाँ, for that. हाँ, अरे थैंक यू मत बोलो भाई, मतलब हम सभी कर रहे हैं, लाइक आप जो कर रहे हो उसके लिए आपको जैसे थैंक यू बोलूंगा तो इट्स लाइक वो दैट गोज विदाउट सेइंग, लाइक हमको करना ही है, बिकॉज एक तरफ हम इसलिए भी कर रहे हैं यार, क्योंकि यार सीधी सी बात है, मैं बता रहा हूँ, मैं आज थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज यूज करूंगा, मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फटी पड़ी है, फटी पड़ी इसलिए है कि यार सुशांत है तो इतनी आवाज उठ गई, भगवान ना करे हमारा मर्डर हो जाए तो फिर तो क्या ही होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो इसलिए करना ही पड़ेगा कि बिफोर दैट वी मैं गेट मर्डर्ड इन द फ्यूचर, भैया जस्टिस मिल जाएगा, सिस्टम तगड़ा बन जाएगा, तो हम लोग इन खुद भी जी पाएंगे और हम कुछ समाज के लिए अच्छा कर पाएंगे। हाँ, एक पॉइंट और याद आ गया भाई, तुम बहुत लकी हो, सुशांत ने तुम्हें उस दिन बचा लिया, बोलो कैसे? कैसे? मुंबई में जो हुआ था, हम्म। तुमने क्या बोला, तुम कहाँ पे बैठे थे? फुटपाथ में। कौन से फुटपाथ में? मुंबई के। गलती से भी कोई भाईजान होता, क्या होता ब्रो? सुशांत ने बचा लिया। यार कभी भी मुंबई में रहो, फुटपाथ में बचे। जोक सपाट, बाकी लोग कंटिन्यू करें। सॉरी फॉर मुंबई दिस वालों पीरियड। सुन रहे हो? बट हाँ, मुझे एक चीज जो तूने एक जो आज पॉइंट बोला ना ब्रो, ये कि हमारे साथ भी ऐसा कभी हो सकता है, उसका क्या होगा? आई हर्ड यू टॉकिंग टू मीतू दी अबाउट द सेम थिंग इज वेल. तू बहुत इमोशनल हो गया था उस टाइम पे. बट आई जस्ट वांट यू टू नो दैट ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला. हम सब है तेरे साथ. ठीक है? अरे और भाई, मेरा मतलब मैं अपने लिए नहीं कह रहा था, मैं कह रहा हूँ आई लोग नो, अगर ऐसे सोचने लगे कॉमन तो कॉमन सबको पीपल. आएंगे। हाँ, अच्छा, सबको और एक चीज ये. क्यूआर कोड की मैं बता दूं कि आप लोग कभी ये टेंशन मत लेना कि क्यूआर कोड अनलिमिटेड टाइम स्कैन हो पाएगा, वो ऑफ कोर्स भारत विल शेयर विथ यू ऑल, एंड उसमें भी एक गुड न्यूज ये है कि दो क्यूआर कोड थे, तो मतलब हम्म. सरकार को भी पता चलेगा तो वो भी बेचारे परेशान होंगे, होना भी चाहिए कि पहला वाला अगर गवर्नमेंट ने बंद भी कर दिया तो दूसरा वाला एक्टिवेटेड रहेगा, जो कि जब तक इंटरनेट नामक चीज है वो एग्जिस्ट करेगी, मतलब कोई भी उस क्यूआर कोड को, उन एविडेंसेस को बैन नहीं कर सकता, हटा नहीं सकता, तब तक जब तक इंटरनेट है, तो रेस्ट एश्योर्ड आर्काइव्ड मस्त है. एकदम धूम मचाते रहो। प्लीज कंटिन्यू सीक्रेट. भाई, हाँ. प्लीज प्लीज बोलो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आर्काइव्ड है. आर्काइव का भी बाप है, वो सेल्फ जनरेटेड टाइप का है कि वो डायनामिक जिसे कहते हैं, मतलब हाँ वो एक कंडीशन पे हट सकता है, जब गूगल ऑफिशियली शट डाउन हो जाएगा, हम्म. ओके. ओके. तो वो तो होने से रहा। आई गेट इट, आई गेट इट. सही है, सही है. बट नहीं, दैट रियली वुड हेल्प. And I won't let Judy G wait more. She has been waiting for a long time. She also had a query which I kind of missed galti se. Sorry, Judy G. Was Oh, that no about? problem. My apologies, Bharat. I never knew my mic was on. I'm sorry अरे about that. fine, वो छोटी सी चीज. Yeah, no, no. My apologies. I know that how it's good to go in. Whoever is ahead, first come, first हाँ serve. हाँ, I mean, I totally it's agree not, with that. it's okay. It was a very small thing. Happened. Yeah, I'll quickly tell. I know there are many waiting. I'll just put down whatever I have to say. Yeah. First of all, let me start with positivity. Kudos to all Delhi warriors. Kudos to all those warriors who joined those Delhi warriors over there on ground, and voiced their voice for Sushant along with his sisters. I know they have been doing relentlessly this efforts throughout, not only Delhi warriors, all the warriors around India, and all those who are in any ways contributing to this movement. So kudos to all and many blessings to them. That is one I just want to tell that. Secondly, for the sisters to be there every time they are there. I don't know what might they may be going through. Like they have to go through the same nightmare what they had on 14 June 2020. It's like the closure is never there until Sushant gets justice, and maybe we might all get a closure if when the criminals, the murderers are caught, but for them it's like a lifelong imprisonment in their thoughts that what happened to their brother, and if, to it nobody can take that away from them. That will always be with them. So that is it. Also, I want to say that
for the naysayers or the trollers who keep on saying the family is not there, I want to tell Bharat, that will continue, Bharat. Even if now also, if two sisters have come down amidst the us, tomorrow it will be, why is the third one not there? Why is the fourth one not there? Then it will be, why is the father not coming? So it's never ending. So Mm. just forget about the trollers, because if they have to complain, they will complain for every bit of things. So there is no solution for that. That's the thing. It will be just going back and forth with them, saying things. So instead of wasting that energy, let's put that energy in something positive for doing for this movement. Secondly, I heard somebody saying that you go to Jahangir Art Gallery, or there are many points in Mumbai, Azad Maidan or Flora Fountain. You go there and you stand there, but it's not possible. Wherever you go in Mumbai, you will be picked. So that was my question for you when I asked you, how were you picked? How did they get the notification that you are there? You're sitting there on the footpaths of Mumbai, front of CBI office. How did they come to know, and how did those 9 police officers land there at that particular time to pick you up? That was my Because we question. went, yeah, because we went to give the application, na? And one of the police officers whom I handed the application to was also a part of those nine officers who came. I mean, 4 or 5 were constable, two might be the junior level officers, and one was DCP himself. So yes, Okay, uh, okay. just So they just followed, they because just kept an eye on you, that what on your movements, what you're doing, and they just trailed you back there to the CBI office. ex- That's what is okay. exactly. Okay, And okay. also the fact that once they took us back, they were way too much into what kind of WhatsApp groups are being created, what kind of conversations happens in those, and things like that. Now, the reason why this happened in the first place, I think, is because we went to ask for the permission, despite of the fact knowing that it won't happen, but we still thought that it would be an ethical thing to do, to go and ask for permission. But when they denied, we left and we moved towards the CBI office. It's hardly a kilometer and a half from the BKC office, from the BKC police station. Couple of kilometers maybe. So when we were there, we just reached and we just sat, and we had our bags packed and all. I mean, nothing was out. And all of a sudden, the car stops and they ask us that you're Bharat Druga, right? You gave the application in the police station. I'm like, yes. तो एकदम से फिर पीछे से दूसरी गाड़ी आती है, डीसीपी उतरता है, देन ऑफिसर्स आते हैं हमारी तरफ, एंड देन हमें गाड़ी में बिठा के लेके जाते हैं. So yeah, that's how things went down. थैंक यू Yeah. सो मच। एक चीज मुझे याद आ गई, वो जूडी जी का ही क्वेश्चन था, याद आ गया Hmm. मुझे। और बहुत ही, Hmm. मैं जिसको कह रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो। थैंक यू सो मच Hmm. जूडी जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। उसका मैं और एक आपको सॉल्यूशन बताता हूँ, जो कि आप एडवोकेट शरण जी हो गए और बाकी लोग हो गए, उनसे बात करके आप लाइए उनको शो में और कीजिए कि क्या मैं बता दूं। पता डर कहाँ पे होता है? पता मैं, आप और बाकी लोग क्यों फियरलेस हैं? उसका कारण ये है कि वी नो द लिटिल बिट ऑफ द निटी-ग्रिटीज ऑफ द लॉ, या कैसे हमारे क्या राइट्स हैं, राइट? ऐसे कोई हमें वो नहीं कर सकता, मतलब टॉर्चर कह लो या जो भी गलत काम कह लो, नहीं कर सकता है। तो क्या है कि जैसे मान लो आपने कोई प्रोटेस्ट वोटेस्ट कुछ किया नहीं, आप परमिशन लेने गए थे, फिर सिंपली आप वहाँ पे गए और वहाँ से आप जा रहे हो। तो कोई आपको इम्प्लीकेट करना चाहे फॉल्सली, लेट अस अज्यूम, या कोई आपकी प्राइवेसी को हिंडर करे, जैसे आप कहे कि ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइक वो फोन को ट्रेस करे और बहुत सारी इधर उधर की चीजें करे, तो ऑल दीज आर इलीगल थिंग्स। तो लॉ ऐसा पावरफुल चीज है जिसमें अगर पुलिस वाला भी, जो सामने हमने देखा ही कि लाइक मुंबई पुलिस कमिश्नर जो पहले जो थे, उनका आज के तारीख में क्या हालत है, राइट? पब्लिक डोमेन में है। तो इतनी पावरफुल चीज है लॉ कि अगर एक कानून जो पालन करवाने का जिसको अधिकार है, मतलब पुलिस वाला या कोई और भी कानून तोड़ता है, तो उसको भी सजा होती है। तो अपने हक को पहचानो, ठीक है? आप अगर कहते हैं ना, नॉलेज इज द पावर, तो अगर आपको खुद नॉलेज है तो यू विल बिकम फियरलेस ऑटोमेटिकली। तो कुछ ऐसे झंझट भी नहीं होगा, होगा भी तो वी कैन टेक द एक्शन। नहीं, मुझे Thanks, Rudra. Bharat, I'll just quickly finish two things and get out from your thing, because I know there are others.
somebody praised you so much in the initially, saying that yes, the way you voice out, but it's not. I won't be like biased. So it's only you. There are the Calcutta Warriors who really touched me too, the way they were voicing. But what touched me most about your action was at the Mount Blanc when you went down on your knees with Sushant's placard. That position, that act, it's I don't know whether, how do I put the words, it's touching, but at the same time it's like thinking that we are in our own country, we have all the rights, and we still have to get down on our knees to ask justice for Sushant. It's like being a refugee in your own country. To For me, it was that way. This is my personal thinking. Okay, this No, is I agree. how I felt when I saw you in that position. And this is, it should not be that way. That no person should be on begging on your knees to ask, plead for justice. But they have brought us down to that state where we are doing that. But I hope they don't underestimate the power of SSRians. That if we can go down on our knees, we can also rise up like a phoenix to get justice. That's the thing. And lastly, I want to leave this with this thought. I know it's negative. I want to know that how things have got changed, whether things have got changed in our system, because I'm seeing it repeatedly in slow motion, the same thing happening again. Like when Mumbai bomb blast happened, that Bhat Pudda's son was involved, and he very 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 this way he got out of it. Same way Aryan Khan got out of it, the drug thing, because of the his Bollywood father. So repeatedly you do things, especially in Bollywood, and you get out of it clean chit because their fathers have money or whatever power. So where does that leave us if this is happening? 1980 bomb blast happened when 1986 or 84, I can't remember. Mumbai bomb blast. Now this is 2021, which happened of Aryan Khan. After a decade, also we are, the same thing is applied again and again. They clearly get out of the crimes what they do. So where are we heading? Is there a change come in the system, or we are just a full stop, a period where we were there that time also? And do you think then if these people who are just Bollywood kingpins, who have power and money, they can get out rescuing their children in any scandal, then what will that minister's son do? And can anybody touch him? If you think, if Aryan Khan and Buddha, Mahesh, what is that? Bhatt's Buddha's son can get out. So where does that leave the minister's son? So that's something I want to leave with the thought. And once again, thank you so much for giving me the opportunity. God bless to everybody. Kudos to all your efforts relentlessly. Thank you. Thank you so much, Judy ji. And I'd just like to say this, that the system is the same, the routes are the same, the engine of the vehicle is the same. It has just got a facelift in different forms. That is what has just happened with the system of India. It's still the same. It just looks different. That's how it is. एंड मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि जो मुंबई में हमने किया या जो करने की ट्राई करी, उसका कोई इम्पैक्ट आया भी नहीं, आया या नहीं आया। बट थैंक्स टू रुद्रबा मुझे उससे पता चला कि हाँ, इसका जो जो भी मुंबई में हुआ, उसका इम्पैक्ट काफी ऊपर तक गया है। तो आई सीधा एम बोलो तो पेंगुइन नगरी तक गया है, पेंगुइन नगरी तक गया है। पेंगुइन नगरी तक गया है। तो एंड आई ट्रस्ट रुद्रबा's information। वो ऑन रिकॉर्ड बोलता है जो बोलता है, एंड दैट मेक्स मी फील बेटर अरे दैट भाई मैंने इसके पहले ऑफ रिकॉर्ड बोला हुआ था, लेकिन अब की बार किडिंग। नहीं, तो आई वाज जस्ट सेइंग कि अगर दो लोग मिलके पेंगुइन नगरी तक पहुंचा सकते हैं बात, तो आप ये सोचो कि अगर 100 लोग मिल जाएंगे तो पेंगुइन नगरी तो नीचे धंस जाएगी जमीन के। तो मुंबई में जिस दिन 100 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, मुझे बता देना, मैं उड़ता उड़ता आ जाऊंगा बिना बिना वेट किए। और आई वुड लव टू। एंड मुंबई में डिस्पाइट, अब तो मुझे सीबीआई मुंबई के सामने प्रोटेस्ट करके रहना है, ये मेरी जिद है।
मैं 100 लोग लेके जाऊंगा और मैं प्रोटेस्ट करूंगा, और मैं देखता हूँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की पुलिस क्या करती है। ये जिद है। आगे बढ़ते हैं ट्रू कलर्स भाई के पास, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं। राम राम सर, व्हाट्सअप। सर राधे राधे। राधे जय राधे शिव सर। शंभो फॉर SSR। जय श्री राम। और वेट जैसी कोई बात नहीं है, मैं कोई वेट नहीं कर रहा, मैं तो आराम से सुन रहा हूँ यार। अरे मजाक कर रहे सर, बोलो। और सभी SSR वॉरियर्स को सुशांत वाली तो ना अभी आपकी आवाज भी नहीं निकल रही ना। हेलो। अरे यार गला बैठा हुआ है बहुत ज्यादा आज हाँ सच वही, में, सेम मतलब सेम। जो सबने दहाड़ सेम। लगाई है ना, वो आप और ऐसे मानो कि ग्लोबली मतलब सुनाई दे रही है सब जगह। ये तो है यार, हम्म। मैं इस चीज को मानता हूँ। आज आज का दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि 14 जून के बाद पहला दिन ऐसा है जिस दिन मिरेकल सा फील हुआ है कि हम भी थे। और जैसे जो मीतू दीदी, प्रियंका दीदी, ये भी मतलब ग्राउंड पे आए, और अपने को तो पता तक नहीं था बोला वो आएंगे सच में। हाँ मुझे तो कोई आइडिया नहीं था, मुझे किसी मुझे का भी भी कोई आइडिया आइडिया नहीं था, सब कुछ मिरेकल था। नहीं था सर। और उस इंस्टेंस ने हमारी एनर्जी 10 गुना बढ़ा दी, मैं तो यही कहूंगा। एग्जैक्टली। तो लेकिन आप वंस अगेन, ट्रू कलर्स भाई, सल्यूट है आपको। हमेशा ग्राउंड पे आप रहते हो, ट्विटर पे आप जो करते हो, हेड्स ऑफ, एंड अरे यार थैंक यू सभी फॉर को बीइंग अ सैल्यूट पार्ट। है। देखो मैं एक चीज जानता हूँ सर, कि हर एक एक SSR वॉरियर का छोटा से छोटा एफर्ट जो है ना, वो भी काउंट होगा और बहुत मायने रखता है। मतलब अपने एक SSR वॉरियर है, फिनिक्स फिनिक्स करके ट्विटर पे, वो बोलती है कि एक सच्चा SSR वॉरियर्स 1 लाख वॉरियर्स के बराबर है। इतनी राइट ताकत है उसमें। वो राइट। ट्विटर, यूट्यूब, ग्राउंड, ठीक है, हर तरीके से प्रिपेयर रखता है अपने को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि हमारी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज है, चाहे वो केस को जानने के रिगार्डिंग हो या किसी भी मतलब काम में पार्टिसिपेट करने के रिगार्डिंग हो, इस SSR मूवमेंट से रिलेटेड, तो हमारी जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज है वो वेरी कर सकती है। मतलब आपकी कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है, बट एक बात श्योर है कि हम सभी की स्पिरिट एक है, वो है सुशांत सिंह राजपूत। और एग्जैक्टली। सुशांत सिंह राजपूत ऑलरेडी जीत रहे हैं, तो हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है। नाइस। मैं अभी यही लिटरली सोच रहा था ऑलरेडी कि जीत रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत सर। आप डे 1 से देखो कि इस केस में एक उम्मीद बन के आई थी, फिर एक टाइम ऐसा आया कि अक्टूबर नवंबर 2020 के अंदर पूरा मीडिया एक साथ चुप हो गया जब रिपब्लिक पे अटैक हुआ। और या उसके बाद से आज तक मीडिया देख लो, मुझे 5 वीडियो बता दो मीडिया की जो सच में सुशांत सिंह राजपूत सर के लिए ढंग से हुई होंगे, नहीं हुई। फिर आया आप था, देखो, हाँ कैपिटल टीवी बहुत आया था। सारे, हाँ बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे, बहुत बड़े बड़े, मतलब जिनको मैं सही बताऊं ना, लोगों ने स्पेशली SSR वॉरियर्स ने इतना अप्रिसिएट किया, इतना आंखों पे मतलब पलकों पे बैठा के रखा, उनकी हर एक बात मानी, सब कुछ किया। देखो पॉलिटिशियंस को मतलब हम पब्लिक ने आंखों पे बैठाया, उन्होंने हमारे गालों पे थप्पड़ मारा। फिर ऐसे ही बॉलीवुड अभिनेता जो थे, उनको अपन ने पलकों पे बैठाया, हमारे गालों पे थप्पड़ मारा। फिर SSR मूवमेंट में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे कुछ, जिनको हमने पलकों पे बैठाया, उन्होंने हमारे मतलब मुंह पे थप्पड़ मारा। और उसके बाद भी सर हम अभी तक टिके हुए हैं, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि हमने सच में हारना सीखा ही नहीं। एक्चुअली मैं बोलूंगा हमें हारना आता ही नहीं है, हम लास्ट तक जाएंगे। सुशांत और जाएगा लास्ट। हम सिर्फ हाँ हम सिर्फ जरिया है। जरिया है, वही मैं बोल रहा हूँ
हम्म, कि सब लोग लास्ट तक जाएंगे, और सुशांत सिंह राजपूत सर को ही नहीं, पूरी जो ह्यूमैनिटी है ना, जो मिडिल क्लास है, स्पेशली जो पब्लिक है, उनको सबको भरोसा होना चाहिए कि यूनिटी में कितनी ताकत होती है। और जो अन्याय है उसके खिलाफ आवाज उठाने से बड़े बड़े जो मतलब सुरमा है ना, बाबर इब्राहिम लोधी जिनकी सोच है, हम्म, तो वो सोच खत्म होनी चाहिए। क्योंकि मैं तो देखो, जैसे मुझे कई लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम ट्विटर पे ऐसे नाम रिविलेशन करते हो, कुछ हो जाएगा वगैरह, तो मैं सीधा साफ उनको बोलता हूँ कि यार देखो, मेरे पीछे रोने वाले हैं तो मुझे टेंशन नहीं है। जिसके अगर रोने वाले ना हो ना, टेंशन उसको होनी चाहिए। वो दोबारा कोई ज्ञान नहीं देता फालतू का। क्योंकि ये जो डर है ना सर, ये डर सबसे खतरनाक चीज है। और इस डर को ऐसा नहीं है किसी और ने पाला है, हम खुद पाल के रखते हैं। तो ये डर दिमाग से निकलना चाहिए। नहीं नहीं, बात सही है ट्रू कलर्स हम्म। भाई। एंड आज का प्रोटेस्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और मैं बता रहा हूँ, आज के बाद से वो प्रियंका दी का ट्वीट मुझे याद आ जाता है, हम्म। एसएसआरियंस अब दी एंटीज, हमने कर दिया अब दी एंटी। और ट्रू। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है, हम्म। एक बार क्विकली लेट्स मूव टू वेगन, एंड देन वील मूव टू सोनल, एंड देन अभय, क्योंकि अभय ऑलरेडी एक बार बोल के जा चुके हैं। तो अभय भाई प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेना। वेगन, हाउ आर यू? Hi Bharat, how are you? आई एम डूइंग गुड, Eh, थैंक यू फॉर आस्किंग। is my voice audible? Because I'm in the end of the room, just everyone is sleeping. I can't speak very loudly. हाँ जी, इट्स वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर। Okay, first of all, hello everyone, and big shout out to you and everyone who are just incredible SSRians. And my heart just feels very prideful that when I see y'all fighting for the justice. थैंक यू। Uh, I am also a very dedicated as a, SSRian. You know, for me from day one, no Bollywood, no if there is no justice, even if justice comes back, Bollywood is dead for me. So I just want there is a lot of things I would like to discuss, but now I wouldn't want to take too much of time. Can you hear me? या Okay. Um, First of all, this the minister of Maharashtra who recently started saying that okay, I have this evidence and I have that evidence. I feel he's just fooling every one of us. See, I think everybody knows, right from the top politicians to the top, people in the legal system or even Bollywood, that what exactly has happened with SSR, but nobody is opening the mouth because they know who is involved, so they don't want to be on the wrong side with those high profile people. So he's just fooling people for emotional way that maybe they can give him votes and all those things. So I also want to request everyone who is going for voting that vote for the right person. Don't vote because that person either belongs to your community or the caste or the religion, or he is somewhere from your same surname. Vote right candidate. At least we'll have some better society for ourselves. And second thing, what I feel is that Sushant Singh Jaisa, I mean, he was not some big celebrity. He was not a criminal. He was such a nice, intelligent human being. क्या था इतना कि उस बेचारे को like if you see the whole journey of his so-called death to the all the last moments, everything looks so much of full of conspiracy, so much full of there is a criminal acts happening with every step, so many people involved. It looks like the links is never ending, people getting involved, the links, it's like whether it is drugs, whether it is you take it, you name it and it is there. You feel so sorry that why he became a victim of such a huge thing, and will we ever understand what caused it, why it caused it, and who caused it? Big mystery. And
I'm sure, like me, everybody wants to know about it. I just pray that we get the right information, right justice for everyone, including the family. My heart is there with them. And don't give up even if nobody I mean, like, suppose SSR justice, we should stand. Don't let a day go without expressing what you feel for him, what you feel for the justice, and you want the justice to happen on all social media. That's the only way we can keep it going, keep discussing what we feel. Come on the social media, support everyone, and that's all I feel, that which will just lead us to the right path. So probably that's all I would like to say. Thank you, everyone. You people are just like, Bharat, when I saw you outside Mount Blanc, I just felt like, wish I could just take a rickshaw, be next to you, and say, okay, I also want justice for SSR. I know so many people around. I know so many. Every time I have sat in a rickshaw and I've spoken to the rickshaw guy, and whatever stories I have been hearing, I just feel I want to stop at the junction and catch hold of everyone and just take them for justice. It's such a sad place, including my friends who stay in the same area. They're saying, no, no, वो तो druggy था, बेवड़ा था, मर गया. I mean, how do you feel when you listen to such talks? People coming and staying in the same area, and you know what they're talking is wrong. And he was made to what he's been shown. I mean, Yeah. such a nice soul, and this is what happened. Shashant, we love you. We will never give up on you, and we are there for you, irrespective of the whatever the world says. Justice will be there in our heart and destiny, and God has to do the miracle and bring the right justice with the right people to the crime behind the bars. That's all I want to wish, and my support unconditional to every one of you all. Love you all. Keep going. And thank you so much. Thank you so much. Thank you for joining in, Reagan, and for your kind words. Means a lot to me. And yeah, the key is to keep going. बोलते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going. So that's what we need to do. We need to show that we are the tougher ones. So yeah, thank you so much once again. Moving on to Sonal. How are you? Long time, buddy. Hi, Bharat. Hi, everyone. True Colors, Abhijit, Rudra. How's your Uh, health? my health is great. Thank you. And this is the first time I'm on the screen. I'm in chat, but I just wanted to say a couple of things. Um, One is thank you is a small word, but heartfelt gratitude for being to you and to each and everyone for being our voice. It was just so heartwarming, so touching to see not just today's protest, but also what you did in Mumbai. And it is just, I'm speaking and I'm getting goosebumps, you know. So it means so much to all of us. Um, Again, thank you is a small word, but it means so much to us, and it means Sushant is hearing what we are doing, and I'm sure we will get justice. um and what a contrast, like, right, like in Mumbai there were like two people, and anyone could have said, oh, nahi karna hai, kya do mein kya kar. The way you guys went, I think it's a huge victory. It's a huge victory, and it's an answer to the naysayers and to those saying, oh, log nahi hai to yahan pe nahi kar sakte. What you did was very risky. It was, hats off to you guys, to you and to Vishal. And I want to be very positive, but I also want to give an answer to some of the naysayers where I heard in Mumbai, someone who was in Mumbai was saying that, oh, यहाँ पे नहीं करना है, Delhi में करते हैं. So today I was waiting for that person to be in Delhi. I didn't see that person. So whenever किसी को मना करो तो उसका solution भी बताओ. Else, encourage what they are doing. At least if you can't do it, fine, encourage them. So hats off,
hats off. It was just amazing, and it felt like हमने तो वो independence का वो नहीं देखा है, but it felt like a small sample of how it must be जब country independent हो रही थी. The josh and the um, it was just I can't describe. I'm not capable of describing it in words. It was just amazing. Keep doing the great work. Take care of yourself as well, and we will get justice. I mean, with this Josh, we have to get justice. And True Colors is here, so I just wanted to again express my gratitude to True Colors. Your threads are amazing. You showed us how it is done on social media, so very grateful to you. And Rudra, obviously, always raising voice. Abhijit raising voice in his own way. Judy's here; she's always vocal. So, really, I think we have created something beautiful out of such a misery or such a sad thing. Let's keep going. And I've always said, and like True Colors also said, each one of us is equivalent to a million people. So अकेले भी है तो करेंगे, जो भी कर सकते हैं, एक ट्वीट भी कर सकते हैं, या एक बार बाहर भी जा सकते हैं, या whatever we can do, right? So we'll keep doing. Sorry, मैंने बहुत लंबा नहीं नहीं Sonal, you have very appropriately put out your points. In fact, I was about to say something and I just got blank. However, Judy ji joined and I'm sure she want to say something. Huh? Yeah, I What came back was once. First of all, hi Sonal. Hi. So I came back Thank you. again. Hi. Yeah, whatever Sonal is saying, she's just voicing my thoughts. There are naysayers who only know to give bhashans and lectures saying that दो जन नहीं करना चाहिए, एक जन नहीं करना चाहिए. Uh, the thing for them is खुद उतरो मैदान में and then speak. You can't point a finger at others when you know that three fingers are pointing to you. That is one thing. And I'm hearing this on and again that in Mumbai, Benny saying that वो ड्रगी था, वो ये था, इसके लिए मर गया. So now I am thinking, Bharat, who's doing is this? Who's doing is this of maligning Sushant as a druggie, as a thing that the people of Mumbai are all everybody are saying this. This is that Chudel who has done this, posted all those videos of Sushant after he died, where he's delusional and all, forcing those drugs in his whatever tea or whatever. And Hmm. now that everybody is not everybody, but in majority in Mumbai, because I'm hearing this from many who are coming and who Yeah, are from Mumbai, who are saying that's this the same story. statement again and again कि वो ड्रगी था, ये था, इसके लिए वो मर गया. So now this is really getting to my nerves, and we should really do something. And then that Chudel, scot free, conscious free. Now she's dancing for weddings and showing off. So now it's high time that we really put our brains together and we put our strength together, that we need to bring her down. That's it. Like, this is enough is enough. We cannot we cannot we can fight for everything, but the common man saying that Sushant was this, we can't fight our own brother. We can fight the system, we can fight the judicial thing, we can fight we can fight against the political, but if our own brother standing next to us says these things about Sushant, how do you fight your own brother? So you have to, the thoughts which have been put in our common man's mind, that he's this way, he's that way, we have to wipe that out. Why? That's the thing. That's why I came back, because this is. नहीं, नहीं. You have said it appropriately. And one thing that I wanted to put across, yes, Judy ji, this is the version which is amongst everyone in Mumbai. For the people who are not aware of the murder angle, they know that he was a drug addict and he committed suicide, because that's the theory that these people tried spreading, right? So people who did not get an exposure to the murder angle, they know that this has happened with Sushant. Yeah, this is really, really absurd, because this It is. whole Bollywood cabal, who is just half of them are not educated, other half is just 10th pass or 12th pass, and they are trying to tell that this person who was so highly educated, who had such a great IQ level, who could talk on any topics around any subject,
and they made him. They you see killing. Okay, fine. You wanted to, chalo, they killed him. They did him. I'm not saying it's whatever they did is, but maligning that name, that disrespecting him. That was their whole target of. First of all, the his whole self-respect they have. They have, what do you call that? वो पैर के नीचे कुचले है. That's how it is. They have done it. And देन and how do you सॉरी go? मैं हाँ बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। जूली जी ने फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है, क्वेश्चंस भी। तो मैं इसमें एक छोटी सी गुड न्यूज़ दे दूँ कि 20 जब ये शुरुआत में 2020 में चालू हुआ था ये नैरेटिव सबसे पहले ड्रग एंगल वाला, तो गुड न्यूज़ इज़ दिस कि 20 ऐसे बहुत ताबड़तोड़ पॉइंट्स हैं, जो बहुत क्लियरली प्रूव कर देते हैं कि सुशांत ड्रग एडिक्ट नहीं नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2 कि एनसीबी ने भी कभी ये चीज़ नहीं बोला है, ठीक है? कि वो मतलब ऐसे ही लेते थे। मैं बहुत बड़ा चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसे 20 पॉइंट्स हैं और उसमें से मैक्सिमम चीज़ें तो पब्लिक डोमेन में हैं। तो ये पहले से था, तो इट्स लाइक कभी एक इसके ऊपर अगर ये सेशन करते हैं भारत भाई, तो इसको भी सामने हम रखेंगे उसी सेशन में। तो इट्स लाइक वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी अगर बात करेगा तो इट्स लाइक लॉजिक से ही हम आंसर करेंगे। हम वो हार्डकोर लॉजिक रखेंगे, तो वहीं पे उनको आंसर मिल जाएगा। तो यस, But सुशांत सर वाज़ But नेगेटिव ड्रग। Rudraba, in Times Now, it was clearly, they when they did the investigation, they clearly showed all the chats of Ria talking with that, what's her name's, with her the uh, Sushant's agent, what is the name, that Deepa put so many drops into his this, or how many drops. How do the people, those people who are saying that, didn't they see those videos or those recordings? Which Times Now, come on, if we are saying they don't believe, but what about Times Now, Republic? They are really prestigious media channels. You don't believe them too? That's the thing. This is No, 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 ridiculous. no. Here you have to, actually, again, credit goes to this whole movement that we got forced to study lots of things, and one of those things is criminal psychology. Now you have to think from the criminal perspective. नेवर फॉरगेट सम पीपल जो कि उसमें अक्यूज में भी हैं, तो सम पीपल वो पहले से ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो जानबूझ के वो इस तरीके से बात करते हैं, चैट करते हैं या बनाते हैं कि वो किसी और को इम्प्लीकेट करें इन द फ्यूचर। तो यू हैव टू थिंक लाइक अ क्रिमिनल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग इनसाइड द माइंड ऑफ अ क्रिमिनल। मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि अभी ये एन्जॉय कर रहे हैं, अभी इनको लग रहा है कि दे आर विनिंग, बट दे डोंट हैव एन आइडिया दैट सुशांत's soul is already working to bring them अरे way भरत down. भरत आपने बहुत अच्छी पॉइंट उठा दी। ये विनिंग वाला भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक बहुत अच्छा बुक है I'll just आपका leave. में, Sorry, Rudaba, आर्ट। I'll just leave Bharat. Okay, thanks again. Thanks. Sorry to again bother you. And thanks everybody on your panel. Thank you. Thank you. हाँ Thank you. भरत, आपने अभी उठाया तो एक किताब है हर कोई पढ़ना, आर्ट ऑफ वॉर। हाँ, बहुत अच्छी ये किताब है, उसको पढ़ना, और नहीं तो फ्री में अवेलेबल है उनके कोर्स इंटरनेट पे। तो उसमें ये कहा गया है कि एक वॉर का ये भी एक रूल होता है कि अपने आप को ताकतवर दिखाओ जब आप कमजोर हो, और अपने आप को कमजोर दिखाओ जब आप ताकतवर हो, जिसको आपने भी बहुत अच्छे से कहा। तो इट्स लाइक ये भी हो सकता है कि वो उन लोगों को पता है कि वो लंबा नपने वाले हैं, इसलिए जानबूझ के अपनी फोटोज वगैरह ये सब डाल रहे हैं कि टू शो कि अरे ये सब बढ़िया बढ़िया है। क्या पता उनको रातों को नींद नहीं आ रही होगी, जैसे 2 दिन पहले आपने कुछ पेंगुइन्स की नींद उड़ाई हुई है, तो फुटपाथ में बैठ के। तो ये सारी चीजें हैं। भाई तेरे को मालूम है, मैं सोनल के पॉइंट का एक रिवर्ट करना चाह रहा था इतनी देर से। Sonal, for you, when once you'll hear this, it was in front of Mount Blanc that I spoke to Vishal and I told him that भाई आज ना वो, मैं ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने विशाल को बोला कि I somehow didn't get the satisfaction, मुझे I don't feel right कि जो भी आज हुआ it is complete, it is still incomplete. And that is the only very reason that I decided to be a part of today's protest. Otherwise, I already had made up my mind to stay in Mumbai only and come back later on when I have to return. But that particular moment when I was standing in front of Mount Blanc,
आई हर्ड अ वॉइस. अब मैं रिया चक्रवर्ती नहीं बन रहा कि मैं बोलूंगा सुशांत मेरे सपने में आया और मुझे बोला. आई हर्ड अ वॉइस. आई लिटरली हैड अ फीलिंग कि नहीं, भारत, दिल्ली, इट्स टाइम दिल्ली. बिकॉज उस टाइम पे दिल्ली का प्रोटेस्ट ऑलरेडी चालू था जोरों शोरों से. एंड आई वाज लाइक कि आई एम वेरी श्योर यहाँ पे कुछ बड़ा होगा. एंड आई एम ग्लैड दैट हमने आज का दिन देखा. सो I'll just quickly move one by one for the closing statements. We'll wrap it up. It's 1 hour 45 minutes already. हमने इतना लंबा सोचा नहीं था. But yeah, Abhay, anything that you would like to say in your closing comment? मुझे 3 पॉइंट रखने हैं कि सबसे पहला तो मेरा क्वेश्चन टाइप है कि क्या वहाँ पर कैपिटल टीवी और रिपब्लिक आए थे. सेकंड पॉइंट मेरा है कि यहाँ राजस्थान के अंदर एक ऐसी घटना हुई है मर्डर की जिसे सुशांत जैसा एंगल देने की कोशिश की गई. मतलब कि कुछ लोगों ने एक मर्डर किया, फिर उसको सुसाइड दिखाने की कोशिश करी, फिर ये अफवाह फैलाई कि वो बंदे ने सुसाइड कर लिया है, और ताकि लोगों को मालूम ना पड़े इसलिए उसको जल्दी से जल्दी, मतलब ये मुस्लिमों में हुआ तो उसको दफन भी कर दिया. और थर्ड पॉइंट मेरा कि आज के प्रोटेस्ट से मैं इतना इंस्पायर हुआ हूँ कि आगे जब भी जून के महीने में प्रोटेस्ट होगा अगर, तो वो मैं ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ दिल्ली के अंदर. प्रोटेस्ट सर दिल्ली में अब से हर महीने होगा. हम इनफैक्ट ये अम, आने वाले अगले महीने की 14 तारीख के लिए भी सोच रहे हैं. और अब हमने ऐसा सोच लिया है कि अब हर महीने एक ग्रैंड प्रोटेस्ट तो बनता है. अब सरकार को हिलाना है. अब वो समय आ चुका है. आपका पहला पॉइंट क्या था? क्या आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? क्योंकि मेरी याददाश्त मेरा हाँ, पहला पॉइंट सा मेरा ये था पहला पॉइंट मेरा ये था कि क्या वहाँ पर रिपब्लिक और कैपिटल टीवी दोनों आए थे. कैपिटल टीवी आया था. रिपब्लिक की खबर आई थी, रिपब्लिक नहीं आया था. कैपिटल टीवी आया था, एंड एंड में आया था वो भी. दे जस्ट केम हियर टू पिक दैट पेस अप, और या फिर मैं ये बोलूँगा कि टीआरपी के चक्कर में आया था. सो या एन और रही बात आज के प्रोटेस्ट की, तो ऑब्वियसली ब्रो आपको दिल्ली में बहुत सारे प्रोटेस्ट का पार्ट बनने का मौका मिलेगा. एंड दैट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून, मे बी नेक्स्ट मंथ 14th को ही या उसके थोड़ा आसपास. यू गाइज वुड बी टोल्ड इन वेल इन एडवांस. और अभी मैंने चैट में एक और रिक्वेस्ट पढ़ी कि is there a possibility that I can join Kolkata Warriors for a protest? Good idea, you know. Ashchi Ami, Ashchi. So I have lived in Kolkata for those who don't know. So I know Kolkata in and out. So yeah, uh, I can think of joining Kolkata Warriors for a protest uh, in the coming couple of months. Within that, जब भी कोलकाता में next protest होगा, और अगर मुझे एक हफ्ते पहले पता रहेगा तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आई माइट जॉइन देम. सो कोलकाता वॉरियर्स, आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ द एनर्जी दैट यू गाइस कम अलोंग विथ. इट्स मैजिकल. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड अभय, थैंक यू फॉर कीपिंग योर पॉइंट्स. See you in the next slide. Thank you for joining in. Uh, True Colors Bhai, any closing comment? मैं तो सभी एसएसआर वॉरियर्स को एक ही बात बोलना चाहूंगा. जिस किसी को भी लग रहा है कि अभी भी बॉलीवुड या गटरवुड के लोग मतलब पावरफुल है, या दाऊद किड्स पावरफुल है, या एमवीए एनसीपी के जितने भी मतलब है ना कीड़े मकोड़े पावरफुल है, उन सब के लिए मतलब एक मतलब आपको एक एक रहता है ना शायरी टाइप से बताना चाहता हूँ मैं कि शेरों को कहना नया शिकारी आया है. शेरों को कहना नया शिकारी आया है, या तो हुकूमत छोड़ दे या जीना. नाम है सुशांत सिंह राजपूत. Beautiful, beautiful, savage.
नया शिकारी यस। तैयार है, गन गन लोड हो चुकी है। ट्रू कलर्स भाई, और गन लोड वैसे भी आप तो जानते ही हो कि भाई महाकाल का भक्त है वो, महाकाल का खुद का बच्चा है वो ऑलरेडी, मतलब शमशान के देवता का जो मतलब बच्चा है वो सबकी समाधि बना चुका। अब कौन कैसे जाएगा वो खुद डिसाइड करेगा, हमें भी नहीं पता। इवन जब वाजे वाला जो केस हुआ था, एक टाइम था वाजे के हाथ में AK-47 थी, हम्म। और कितने लोगों ने अर्नव को घेरा था। पर क्या वाजे को या क्या अपन ने उस टाइम पे अंदाजा तक भी लगाया था क्या कि वाजे के मतलब खुद मतलब सिर पे आज है ना जो यमराज हर दिन मतलब मंडरा रहा है, हर दिन। सोच के देखो, हमने सोचा ही नहीं था ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो शमशान के देवता महाकाल का भक्त है, बच्चा भी है, और वो सबकी ऑलरेडी समाधि बना चुका है। कौन कैसे जाएगा वो वक्त डिसाइड करेगा, और बस तांडव चल रहा है, देखते जाओ। आज जब मैंने सिस्टर्स को रोते हुए देखा ना, ट्रस्ट मी, मेरी आंखों में अभी भी आंसू है। एंड इवन इफ मैं सोच भी रहा हूँ ना वो वाला मोमेंट अपनी आंखों के सामने, I'm getting teary. So, I mean, I have no words for today. And जितना भी मैं थैंक यू बोलूँ आप सबको, कम है आपके सपोर्ट के लिए। और वी हैव टू बी मोर स्ट्रांग नाउ। लेट्स टेक टुडे एज वन ऑफ द बूस्टर शॉट ऑफ दिस कैंपेन। क्या है ना वो लगवाई थी वैक्सीन, 2 डोज हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया, तो बूस्टर शॉट की ज़रूरत पड़ गई। तो बूस्टर शॉट था ये। एंड और आगे करते हैं फिर ट्रू कलर्स भाई मिलके प्रोटेस्ट। थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। और रुद्रबा, एनी क्लोजिंग कमेंट्स ब्रो? बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे मैं एक इंसान का नाम जो है कोट करना चाहूँगा, प्रशांत जी। उन्होंने अपने बायो में बहुत अच्छा लिखा हुआ था कि सुशांत के लिए लड़ना है तो सुशांत बनकर लड़ना। अब ऑफ कोर्स सुशांत बनना तो इम्पॉसिबल है नियरली, बट उनकी हम अच्छी बात क्या सीख सकते हैं, वो लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते थे। तो हम जितना केस के बारे में, एक मैं हाथ जोड़ के आप सभी व्यूअर से और जो बाद में देखेंगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के लिटरली केस के बारे में भी और अदरवाइज़ भी आप अपने नॉलेज पे काम करो, तो क्या होगा, आप स्टेटमेंट फिर जब ग्राउंड में उतरोगे, लोगों से कम्युनिकेट अच्छे से कर पाओगे, तो आपका पार्टिसिपेशन लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? क्योंकि जब कोई ऐसा इंसान जो केस के बारे में कुछ नहीं जानता और आपको नॉलेज थोड़ी बहुत ठीक-ठाक होगी, अच्छी होगी, आप अच्छे से उसको कन्विंस क या फिर इन्फॉर्म, अवेयर कर पाओगे। तो आप नॉलेज पे काम करो और क्यूरियस माइंड रखो, ठीक है? ये जो भी कुछ आज ये नहीं कहूँगा कि मैंने किया, हम सभी ने जो किया वो उस क्यूरियोसिटी का ही नतीजा था। तो बस सारी चीज़ें हो जाएँगी और जस्टिस भी मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ जो मुझे थोड़ा-सा 19-20 में से 19 लगा आज के पूरे मोमेंट में, कि जो जोश ग्राउंड में था ना, मैं कहता हूँ उसका 1/10 कैमरा में कैप्चर हुआ है। मतलब आप लोगों ने जो यूट्यूब लाइव देखा है या कहीं पे भी देखा है, मैंने वीडियोज़ को देखा, इट वाज़ लाइक 1/10, और अगर कहीं पे अच्छी क्वालिटी में आई है तो हाल्फ ऑफ व्हाट एक्चुअली इट वाज़ ऑन ग्राउंड। जो यस। था ना वो तांडव था। अभी अचानक से जब वो चीज़ सामने आ रही है ना, फिर से घूम रही है, तो लग रहा है जैसे हम सब तांडव करके आए हैं, कि एकदम गुस्से में हमारे अंदर से तांडव हो रहा था। तो वो वाली चीज़ थी। तो बस वही है, महाकाल के वो भक्त थे और हम हमको भी पता नहीं, हमको खुद फ़ील नहीं हो रहा था कि हम क्या कर रहे थे, बट वो हो जाता है। यही सारी चीज़ें हैं। पॉज़िटिव सोच ही हमको आगे लेके जाएगी। बस आई रेस्ट माय केस हियर। गुड नाइट, और भाई अच्छे से रेस्ट ले लो। हम सभी हम्म। बहुत थक गए हैं मतलब आज के लिए। भाई मेरे को तो एयरपोर्ट पहुंचना है कुछ घंटों में, बट हाँ ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन रुद्रबा ट्रू कलर्स। आज का डिनर मजा चलो हम नेक्स्ट वील टॉक ऑफलाइन अबाउट दिस। एंड एक बार फिर से हार्टफेल्ट थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन फॉर योर सपोर्ट, फॉर बीइंग देयर। Let's get a little more serious for Sushant, for his justice, because it's high time now. We cannot sit and wait. Along with keeping one thing in mind, let's be a little more humble, a little more human every day.
Let the facts do the talking. One life. Signing off.